Monitoring is a continuous process that aims primarily to provide the management and stakeholder with the indicators of the progress and lag in the achievement of the result. And the monitoring system of College of Physician Research in Pakistan was in the past the conventional logbook. Then we shifted in I think 2010 or 11 to the electronic monitoring system. And remember, our manual logbook in 2005 is in front of you, 2008, 9 and 2010 and 11, which was I think the combined. And you all are the medical educationists. You know there was shortcoming of the conventional logbook. There was no regular or periodic evaluation of the logbook. Conventional logbook used to be presented at the end of the training. आपके ट्रेनी है 4 साल के बाद आपकी लॉगबुक वो प्रेजेंट कर रहे हैं और जब साल के ट्रेनिंग के एंड पे प्रेजेंट करते हैं तो यू डोंट रिमेंबर इस बच्चे ने ये कॉम्पिटेंसी अचीव की कि नहीं की बगैर गो थ्रू देयर वर सम सुपरवाइज़र जो लॉगबुक को साइन करते थे और उसका एंड रिजल्ट ये था दिस रिजल्टेड इनटू नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड पुअर मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम. We shifted this manual logbook to the E.log और उसकी फ़िलासफ़ी क्या थी कि टाइमली एंड सिस्टमेटिक प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन. आप देखेंगे कि लॉग बुक पे जब स्टूडेंट अपनी कॉम्पिटेंसी एंटर करता है वो एक्सपेक्ट 4 हफ्ते करेगा 3 महीने के बाद उसको रेजिडेंसी प्रोग्राम डायरेक्टरेट अप्रूव करके वो सबमिट करेगा उस सेंट्रल डेटाबेस में तो उसमें टाइम और डेट लिखा होगा. सो देयर इज ए प्रोस्पेक्टिव एंड रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रेनिंग. Another important thing is 360 feedback both for the supervisor and trainee that help in inculcating the professionalism and monitoring of the professional attribute. That is very important. You know, feedback is one of the most important component of professionalism. Now, as a medical educationist, you know already that when you start a program, you do not start from day one. First, you sensitize the people. Then you plan. There is a pilot project, testing of that program. Then you start implementing and then you evaluate and re-evaluate your own program. So we started this phase of sensitization as I mentioned. When we visited Canada, we studied this CanMed system and then we had the concept of this electronic monitoring. We started sensitization of our trainee and our trainer. We had the different workshop in various institutions and we told them कि हम मैनुअल लॉग बुक से E.log शिफ्ट करने जा रहे हैं. E.log का तरीका कार है ये इस अंदाज में वी आर गोइंग टू मॉनिटर. फिर हमने 2009 और 10 में इसको प्लान किया कि यस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट और 2011 में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया और उसका पायलट प्रोजेक्ट इस पर रिसर्च स्टडी आई. अगर आप मेरा अपना अकाउंट देखें रिसर्च गेट पे तो आपको E.log पे study मिलेंगी और my own PhD in medical education. I think that also relates to the monitoring of the postgraduate residency program. And then I have the opportunity to present my pilot study on various forums in Australia, in Malaysia, in Canada and in UK. I think this is one of the important international conference on medical education where you can see the father of the medical education, Professor Harden is there. He was chairing the session where I presented this electronic monitoring system of CPSP. Similarly, in 2016, I presented the same on International Medical Educator Leadership Forum in Canada, where we also discussed the Lancet Commission report. And in that Lancet Commission report, the main sub-theme discussed, they were transformation, social accountability, interprofessional collaboration and ethical consideration. So again the important competency they discussed at that time was the professionalism, and you can see the presidents of the various royal colleges and other colleges they were there, and I had the honor to represent College of Physician Research in Pakistan. Now this is I think the e-portal address of E.log system of CPSP. We implemented this for fellowship program in July 2011 and for membership program in January 2012. And you know, all the supervisor, they are 4,000 plus, all the trainee, they are 30,000 and plus, they are given ID and password. And remember, once you have got ID and password, उसी वक्त आपका प्रोफाइल
E.log पे आ जाता है. Now e-portal. So E.log is the pre-activated for all user. इसमें आपका पर्सनल प्रोफाइल, आपका प्रोग्राम, आपकी रोटेशन, रजिस्ट्रेशन, they already exist when they award you the ID and password. You can update your profile and you can edit your personal information. Now we expect the trainee, they are going to upload their competencies on the weekly basis. Supervisor will submit on 3 monthly basis. The supervisor has got the provision to approve that competency, to advise the discussion, and to reject. I think they can say no, you have not attained that competency, and report is submitted after every 3 months. Once the report is submitted, then they become the part of the National Residency Program Directorate. Submit करने के बाद दोबारा आप edit नहीं कर सकते. और आइकॉन्स जो उसके अभी मैं आपको दिखाऊंगा, दे इंक्लूड रूटीन प्रोसीजर, इमरजेंसी, जनरल क्लब, CPC मीटिंग, पेपर्स एंड पोस्टर प्रेजेंटेशन, publication, and the feedback of the trainee, CME history of the trainer, and trainee can save the entry, edit them, but once submitted cannot re-edit them, or then that is not his or her property. Now the important thing I will stress upon is the prospective monitoring. जो ही एंटर करेंगे, डेट भी होगा, टाइम भी होगा, तो ये ऐसे नहीं होगा कि आप मैनुअल लॉग बुक 4 साल के आखिर में देख रहे हैं. यहाँ सुपरवाइज़र भी मॉनिटर करेगा, कॉलेज भी मॉनिटर करेगा कि ये कॉम्पिटेंसीज 4 साल में मुसलसल स्टूडेंट अचीव करके एंटर करता रहा है. और इसमें एक ये प्रोविजन भी है कि हमने पहले ये देखा था कि लाइक आफ्टर 4 मंथ्स स्टूडेंट ने 500 कॉम्पिटेंसीज इकट्ठी एंटर कर दी. तो इस पे भी हमने उस अंदाज में वो बार लगा दी कि आप 100 से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी इन ए स्पेसिफिक टाइम आप एंटर नहीं कर सकते, ताकि आपकी रेगुलर कॉम्पिटेंसी की एंट्री हो, एंड देयर शुड बी अ रेगुलर मॉनिटरिंग. So E.log then shifted to the e-portal, and we have got the good e-portal for the trainee, supervisor and fellow. And I think I'll again mention here, I just saw on the group the e-portal of telemedicine of King Edward Medical University, the e-portal for the doctor, for the patient, for the administration, and I think we learned something from CPSP too. This is the template of the E.log book for the supervisor. इसमें ये तमाम उसमें ये चीज़ें इंफॉर्मेशन मौजूद है. आई थिंक नाउ यू हैव गॉट एक्सेस ऑफ द E.log ऑफ योर ट्रेनी. Once the trainee entered the competency, they appear as the blue. So you see the blue competency, they are waiting for approval. Once you approve that competency, that turned from blue to the green. And similarly, if you don't approve, that appear as the red. Suppose 510 trainee to the Irish health system. We have exposed 360 trainee to the UK health system. And when I interacted with one of the trainee, I just asked her, what have you learned when you were in your training phase in Ireland? She said, we have the financial incentive. We worked in the evidence-based medical environment. And then we saw more, I think, the good technology too. But the most important thing which he mentioned is about the ethical practices and professionalism. उन्होंने कहा कि मैंने 1 हफ्ते में जितना सॉरी और थैंक यू आयरलैंड में कहा, मैंने 6 माह में पाकिस्तान में इतना सॉरी और थैंक यू नहीं कहा. तो पेशेंट के साथ हम सॉरी और थैंक यू कहने वाले बन जाएं, बेहतर अंदाज़े गुफ्तगू हो जाए. आउटडोर में हम बैठे हैं, पेशेंट हम 50 के करीब देख रहे हैं. अब जो 50th पेशेंट आ रहा है वो समझ रहा है कि आई एम द फर्स्ट पेशेंट. अब उस वक़्त आपने अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ, मुस्कुराहट के साथ पेशेंट से बात करना, पेशेंट को रिसीव करना, आई थिंक दैट इज़ half of the treatment, and this thing is being assessed during your interaction with the long and short cases. और ये हमारा आयरलैंड के साथ जो डेलीगेट लास्ट वीक गया, एंड वी हैव द मीटिंग विद द प्रेजिडेंट ऑफ द रॉयल कॉलेजेस, और इसके साथ जो ट्रेनी उनके साथ मीटिंग थी. एंड अगेन वी हैव मेंशन देम कि व्हेन वी आर गोइंग टू मॉनिटर योर सुपरवाइजर एंड indirectly the monitoring of the trainee through your supervisor in our E.log system, we will see all those competency which are requirement of competency based medical education of CPSP. और इसमें I am just going to share
कि ये जो प्रोग्राम हमारा है, दिस स्टार्टेड इन 2013. हाँ, वी विजिटेड आयरलैंड इन 2008. 2013 में पहला बैच किया, लेकिन इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा जैसे मैंने मेंशन किया, और इस सीखने के साथ अच्छी बातें सीखी, प्रोफेशनलिज्म सीखा, और ये एक डॉक्यूमेंट्री 45 मिनट की बनी कि इन बच्चों ने क्या सीखा, आयरलैंड को क्या फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ. इसमें एक हाफ मिनट का ये क्लिप मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि किस अंदाज में बच्चे फील कर रहे हैं कि येस वी हैव बिकम द गुड डॉक्टर व्हेन वी हैव बीन एक्सपोज टू दिस इन्वायरमेंट, जहाँ एक प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का इन्वायरमेंट है, एंड द सुपरवाइज़र they try to inculcate the competency of our professionalism and ethical practices. International recruitment in a more ethical manner. The International Medical Graduate Training Initiative is a 2-year program where trainees come from the training programs in Pakistan. While they're here, they're still registered with the college in Pakistan. Their training here is recognized by the college, so we're not prolonging their training. And then ultimately what we're hoping is that they will go back to their own country and that we're not depriving that home country, in this case Pakistan, of a really precious asset. I've learned most of the things which we only used to read in books and literature. We are practically seeing those new things, new machines, the drugs and every technology which we used to read in books. The upcoming doctors in Pakistan, as a big brother, I can tell them, that you do research and implement, good positive things. Here, most of the infections are being prevented by the hand hygiene, 5 moments of hand hygiene according to WHO. In my country, the basic problems are infections. So if we do hand hygiene and antibacterial techniques, antiseptic non-touch techniques in back home, we can prevent half of the diseases. As a single person, it's very difficult to bring about the change in a region, in a country, but at least I can participate my own role. Since 2013, around 200 doctors have been trained under the Irish initiative. और I think the good thing which I wanted to share with you कि ये स्कीम जो आयरलैंड और पाकिस्तान के साथ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन हेल्थ सर्विस एग्जेक्टिव की है, दैट इज़ अ रोल मॉडल स्कीम. 2013 से स्टार्ट हुई, आज 10 साल हो चुके हैं, एंड दिस ए विन विन सिचुएशन. बच्चे सीख के आते हैं एंड दे हैव द गुड डॉक्टर्स, दे हैव गुड इंप्रेशन अबाउट योर डॉक्टर. इसमें एलएस गवर्नमेंट दुनिया को ये मैसेज दे रही है कि हमें हेल्थ सर्विसेज में प्रॉब्लम हुआ, हमने ये MOU साइन किया, और अगर किसी मुल्क को भी हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ सर्विस डिलीवरी में प्रॉब्लम है, दे कैन फॉलो सच एन एग्जाम्पल. एंड दिस इज ग्रेट ऑनर फॉर अस कि एक ऐसा फीडबैक दुनिया को दिया जा रहा है पाकिस्तान के बारे में, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के बारे में. मैं ये समझता हूँ ये सारा क्रेडिट उन तमाम लोगों को है, उन तमाम ट्रेनर्स को है जो बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, और ये बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं. दे आर द रियल एम्बेसडर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन एंड दे आर द रियल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान. सो दिस इज़ वन वे द CPSP इज़ एक्सपोजिंग इट्स ट्रेनी टू अ सिस्टम जहाँ से ये सीख के आते हैं एंड देन दे विल come back to Pakistan compulsorily and they will serve the people of Pakistan. I think this is my last slide, and I have addressed the issue of variation in the training. And supervisor feedback helps the college in monitoring of training standard and professionalism. E.log provide a feasible and authentic option for the developing country to run a standardized residency program at national level. और ये मैं आपको I just wanted to share with you one of the feedback which I was given on an international forum. कनाडा में जब मैं इसको प्रेजेंट कर रहा था तब जो ये स्लाइड सामने आई तो उस वक़्त रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन कनाडा के प्रेसिडेंट 2015 की बात है, प्रॉब्ली प्रोफेसर फिट्स प्रेसिडेंट थे. तो ये स्लाइड देख के वो ये कहने लगे कि जिस अंदाज में आप 30,000 ट्रेनी को मॉनिटर कर रहे हैं ID पासवर्ड के साथ, जिस अंदाज में आपके 4,000 के करीब सुपरवाइज़र इंगेज्ड हैं, इतना बड़ा सिस्टम दुनिया के किसी रॉयल कॉलेज के पास नहीं है कि ऐसा फीडबैक हो जिसमें तादाद ट्रेनी की ये हो नहीं है, सुपरवाइज़र की तादाद हो नहीं है इस अंदाज में. क्योंकि E.log सिस्टम एक ऐसा है जिसमें कॉलेज इज़ द लीडर, Pakistan is the leader, and by the grace of Allah Almighty, that thing has been acknowledged, which I have mentioned
एट आवर इंटरनेशनल फोरम आप रॉयल कॉलेज आयरलैंड के ले लें, यूके के ले लें, कनाडा के ले लें, यू हैव गॉट 1 डे, एक दिन में यू आर सपोज टू कंट्रीब्यूट समथिंग। मुझे फातिमा जना में तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया। 1 हफ़्ते के दौरान वी हैड द एकेडमिक मीटिंग, वी हैड द फाइनेंस मीटिंग, वी मीटिंग विद द स्टूडेंट्स, और ऑलरेडी 3 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम नए इसका इंस्पेक्ट होके प्रॉबेबली इसमें ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। और शायद मेडिकल एजुकेशन में कल फेलोशिप का तस्करा हुआ, किसी मेरे दोस्त ने ये कहा फेलोशिप प्रोग्राम शुरू कराएं। तो चूँकि मैं अब वाइस चांसलर भी हूँ और PhD ख़ुद भी मेडिकल एजुकेशन में हूँ, तो इन तमाम को मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि अगर कॉलेज के प्रोग्राम में थोड़ी सी देर हो तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू जॉइन द PhD प्रोग्राम ऑफ फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेयर। तो इसी अंदाज में चीज़ें लेके जा रहे हैं। टेली मेडिसन में हम आपकी हेल्प लेंगे कि टेली मेडिसन एक अच्छा प्रोग्राम है और उसको डिस्ट्रिक्ट तहसील से भी लिंक करना है। फातिमा जनाब ये उस अंदाज में है नहीं है, प्रॉब्ली वी विल इस्टेब्लिश टेली मेडिसन प्रोग्राम टू। तो इस अंदाज में नेचुरली आप जहाँ भी जाते हैं यू ट्राई टू कंट्रीब्यूट with the help of the team, and I've got the good team. I'll try to contribute here too. Thank you ladies and gentlemen for patient listening.